Namaskar. A healthy heart is very much necessary for a healthy life. But do we care for our heart so that it stays healthy? Let's put it in a perspective. क्या क्या कर सकते हैं छोटी छोटी चीजें which can help you keep your heart healthy? क्योंकि lifestyle disorders, cholesterol issues are rise or are rampant in nowadays. Young people starting from late 20s or their early 30s come up with cholesterol issues and heart issues. So something which we need to know basis, very need to know and very basic things. सबसे पहली बात eating, healthy eating habits, because give it to your office timings, give it to your schedules, give it to anything, you cannot compromise upon your eating habits. Keep that in mind very much. Healthy ही खाना है, balanced diet लेना है, raw diet लेना है. Even if you are non-vegetarian, see that you are consuming that in the regular forms or in the healthy norms of calories. Google will help you with that, or will be putting up a video even for that. For vegetarian people, try and go raw at least one meal. Rest, manage the timings. आपके हर रोज के खाने के टाइमिंग्स एकदम रेगुलर हो, जिसके कारण आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, and it would be the food should be creative in output rather than lowering your output, your metabolism, your activity levels. Second thing is exercise. खाना खा लिया, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज. डोंट काउंट स्टेप्स ऑन योर काउंटर का आज मैंने ऑफिस में इतने स्टेप्स चल रही है. नो, बिकॉज दैट इज एन समवेयर सबकॉन्शियस वॉकिंग पैटर्न कि हम काम कर रहे हो, चल रहे हैं. जैसे अगर आपको चलते चलते खाना दे दिया तो क्या आपको सटाइटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब तक आप बैठकर फूड पे कॉन्सेंट्रेट करके नहीं खाएंगे, यू विल नॉट फील सटाइटी. इन द सेम वे एक्सरसाइज ऑल्सो नीड्स टू बी डन इन अ डेडिकेटेड वे. सो what you're walking is a part of your active lifestyle, different, but you need a dedicated 30 to 40 minute window of exercise. It can be yoga, it can be pranayam, it can be walking, jogging, cycling, swimming, anything of your choice, but 30 to 40 minutes of a dedicated time for physical activity daily. Now we come down to some conditions where we say that these are very common, like diabetes. Manage your blood pressure, blood sugar levels, because in diabetes it's very important, otherwise they would start affecting your blood vessels and other organs too. So managing your blood sugar levels with food and with exercise, again ये दोनों चीज आपको शुगर लेवल्स मैनेज करने में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि शुगर जितना है, अगर आपने नहीं देखा तो हमारा डायबिटीज का वीडियो भी जाकर देख सकते हैं. व्हाट इज द साइकिल ऑफ द शुगर प्रोडक्शन एंड शुगर इनटेक, तो आपको ज्यादा पता लगेगा. सो मैनेज योर शुगर लेवल्स, eat well, exercise well. The second point comes is blood pressure patients. The patient with hypertension, वो लोग भी predisposed है हार्ट कंडीशंस को, तो आपके हाइपरटेंशन लेवल्स मैनेज कीजिए, नमक कम खाइए, जितना हो सके एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपर टाइम पे स्लीप लेना है, प्रॉपर टाइम पे फूड लेना है. भले ही आप बिजनेस कर रहे, भले आप जॉब कर रहे, योर वर्क शुड रिवॉल्व अराउंड योर हेल्दी लाइफस्टाइल, नॉट योर लाइफस्टाइल अराउंड योर वर्क. तीसरी बात अगर हम समझने जाए तो स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा. दो हमारी लाइफस्टाइल या हमारा काम, या इट कुड बी टू डिमांडिंग, समटाइम्स फिजिकली, समटाइम्स इमोशनली, समटाइम्स इंटेलेक्चुअली, ये फेजेस हो सकते हैं. बट इस फेजेस में भी बीच में से 10 मिनट का, 15 मिनट के आप विंडो निकाल सकते हैं, जहां पर बैठ के आप ऑफिस में सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सम गाइडेड मेडिटेशंस, सम लाइट म्यूजिक्स, दैट वुड हेल्प यू रिलीव योर स्ट्रेस. Set goals very realistically, work upon them, do not stress out upon them, see how you are working, work in portions, divide your work, and I think it would help you in managing your stress. जितने आपके stress levels कम है, आप healthy रहेंगे. If you are following Dr. B.M. Hegde also, he tells the same thing. Be calm, be happy. The less the stress levels, the more the anxiety and more the health issues. And last and most important is addictions. If you are into smoking, if you are into tobacco chewing, or if you are into regular alcohol consumption, you need to check upon that. Because these people are more prone, 3 to 4 times or 5 times more prone to rather than the healthy people for this kind of heart conditions and heart disease. So see that you follow all these steps well. Inspire the family members. आप जितने लोगों को जानते हैं, if you feel कि you are not in that age group, pass it on to your family members
एंड बियॉन्ड दैट इनमें से कोई भी कंडीशन है, go for an homeopathic approach. Homeopathy helps you understand, undermine and relieve the stress, physical stress, emotional stress both. They make you live in a healthier version of yourself. So get in touch with a homeopath near you, or you can get in touch to us also. Till then, practice these tips and hope you remain healthy, stay fit. Thank you.